Hello friends, I'm Adinath Giri from GIRI'S Tech Hub Pune. Welcome in a session of a programming series using a Java. Friends, we have a question. Write a program to input the character from a keyboard and check whether it is a small character or small alphabet or a capital alphabet or a digit or a special symbol. Okay. तो जस्ट फ्रेंड इस कोड में हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से कैरेक्टर इनपुट करें। जैसे कि मैंने ये किया तो हमें ऐसे आना चाहिए, इट इज अ स्मॉल स्केल अल्फा, इट इज अ स्मॉल अल्फाबेट। अगर हम कैपिटल ये करते हैं, इट इज अ कैपिटल अल्फाबेट। अगर हम जीरो करते हैं, इट इज अ डिजिट। हमें इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाना है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे? जस्ट कुछ नहीं है, हमें सिंपल स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, accept the character from a keyboard. Second, compare the character with a small alphabet or its ASCII or capital alphabet or a digit and special symbol. Okay, तो जस्ट अभी हम सिंपल कोड लिखते हैं इसका। अगर हम यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे, import java.util.staff public class check character public a static void main a string of x is here। फिर आप यहाँ पे लिखिए scanner xyz new scanner system dot in is here, character of a ch system dot out dot println enter a character from a keyboard ch equal to xyz dot next dot character of a 0 is here। Then we can write here if ch greater than equal to of e and then the ch less than equal to of h, else if ch greater than equal to capital A and then the ch less than equal to of a capital Z, else if a ch greater than equal to 0 and then the ch less than equal to of a 9 and else is here। And else. This is very simple. So we can write here a system.out.println small alphabet system.out.println capital alphabet system.out.println digit and a system.out.println a special symbol, special symbol। So what happened friends, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ये डालते हैं, यहाँ b देते हैं, so b is greater than equal to ये, yes, and b is less than equal to z, yes, तो ये आपका यहाँ पे आके क्या कहेगा, स्मॉल अल्फाबेट। अगर आप यहाँ पे कैपिटल बी कर देते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल बी लिखा, so capital B is not greater than of a small a and less than of a small z, yes, तो ये कंट्रोल यहाँ पे आके चेक करेगा। सो ये फ्रेंड्स इस तरीके से रन होगा। सो जस्ट वेट, मैं इसे आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे import java.util.star public class check character case, ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं public static void main string of x is here। Then we can write here scanner
XYZ न्यू ऑफ स्कैनर, और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, the character of a ch, system dot out dot println, enter the character, ch equal to xyz dot next dot char at of 0. If ch greater than equal to of a and at ch less than equal to of z, else if ch greater than equal to capital A and at ch less than equal to capital Z, else if ch greater than equal to 0 and at ch less than equal to of 9, and else is here. Okay, it is very simple. System dot out dot println small alphabet, system dot out dot println capital alphabet, system dot out dot println digit, system dot out dot println special symbol. ऐसे just wait. फिर फाइल से बाद check character case dot java, java c check character case dot java. oh sorry, यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है, प्रिंट ऐसे चाहिए था, आप सेव एज करें, जावा चेक कैरेक्टर केस, एंटर अ कैरेक्टर, स्मॉल अल्फा, कैपिटल अल्फा, आप यहाँ पे 0 इंटर करें, डिजिट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, स्पेशल सिंबल। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल कोड है, हम इसी इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।